Periyar Panthers and Palani Tuskers. Yes, they had a tough one. The last match when they played a day before, when they had to surrender for a tie, and now can they go all out and make sure they win it? Wow, that's a big victory for the Hampi Heroes, winning by a 52-point margin. Again, sending Kaziranga Rhinos down to that no confidence zone, as Aravalli won that by a very close one against Panchala Pride. And after this, the 9 p.m. game will be Murthal Magnets taking on the Chola Veerans. And also looking at that points table, it'll be really interesting now to see, because this slotting of the teams will actually help us in slotting the summit round as well. So depending on the number of places the teams have been taken, and then the summit round playoffs will be decided, as Hampi Heroes are right up there and Palani Tuskers right there, the second one. So how does the road to finals actually look like is a very interesting prospect. This is what it is, as we have the qualifier 1, 2, 3 and eliminator 1. So if you're finishing a top 6, you are actually entitled to go ahead and play the finals very closely. And if you're finishing at actually 1, this is the frame that we really want to explain you out there. 1 and 2, they will play the qualifier number 1, and then the loser of qualifier 1 will go to play the qualifier number 4, and the winner of the qualifier number 2 will play that qualifier 4. So depending on those lines, the progress will go through. And even if you lose the qualifier 2, you will be placing in the qualifier 5, where you will be playing against the winner of qualifier 3. But in the eliminator, if you are placed 8, which I'm sure probably as of now is Kaziranga Rhinos, if they lose that eliminator 1, they will actually have to pack their bags and go home. But eliminator 2 again will be the loser of the qualifier 3 and then the winner of eliminator 1. So it's better to keep on winning and go to that road to semi-finals, as I also have Harshit alongside with me to explain the other quarter of this standings as well. Harshit, good evening. जी नवीन, गुड इवनिंग। और जिस तरह से आपने बताया कि वो क्वालिफायर 6 तक का सफर, और उसके बाद जो यहाँ पर लूजर होंगे क्वालिफायर 6 के, वो आपको एलिमिनेटर भिड़ते हुए नजर आएंगे। विद एलिमिनेटर के जो 3 के विनर होंगे वो वहाँ पर आपको एलिमिनेटर 4 में खेलेंगे। एलिमिनेटर 5 की अगर आप बात करें तो जो विजेता होंगे हमारे क्वालिफायर 6 के और जो विनर होंगे एलिमिनेटर 4 के, वो वहाँ पर भिड़ते हुए नजर आएंगे। धीरे धीरे ट्रॉफी की तरफ नजदीकियां पड़ेगी। उसके बाद होगा वो एलिमिनेटर नंबर 6, जहां पर क्वालिफायर नंबर 4 की विजेता टीम होगी और जो पिछला एलिमिनेटर यानी कि एलिमिनेटर 5 जीत कर आई होगी, वो वहां पर भिड़ेंगी। और उसके बाद वो क्वालिफायर नंबर 1 विनर और साथ ही साथ एलिमिनेटर 6 के विनर्स आपको भिड़ते हुए नजर आएंगे इस चमचमाती हुई ट्रॉफी को लिफ्ट अप करने के लिए। तो ये था रोड टू फाइनल, जिसके बारे में भी आगे की तरफ और बात की जाएगी। मुकाबले के दौरान काफी समय है शेष, बट ज्यादा समय यहाँ पर दोनों ही टीमों को मिलेगा नहीं, क्योंकि ये दोनों टीमें आ रही हैं एक टाई मुकाबले के साथ। और ये मैच सच में दर्शनीय होगा, प्रभावशाली ये मुकाबला बहुत ज्यादा होगा। सर्वोच्च कबड्डी की हम यहाँ पर उम्मीद रखते हैं। और चलिए बुला लेते हैं सबसे पहले द डेब्यूटेंट टीम, यानी कि जिन्होंने शोर पहले ही एडिशन में मचा दिया है, वो है पालनी टस्कर्स। अब अपनी तेजी और अपना एम्बिशन प्राप्त करने के लिए पैंथर्स भी हैं बेकरार। बुलाते हैं पेरियार पैंथर्स। Yes, Harshit, Periyar Panthers and Palani Tuskers both have descended onto the mat, and the road to finals will always be the contention, where we have the penultimate day today of the challenger round, as Velavan is back and Saktivel, the right corner. Yeah, that's a nice name. That's a new name that we are actually watching. So we'll have to see how that right corner works. And Sanjeevi, the real skipper, the original skipper, actually makes a comeback with Sudhakar
and of course Mukesh Kannan will be there, and Mukilan and Gokula Kannan will be the covers, as Masanamuthu finally I think will be rested because of that little injury that he got, and he will be in the substitution lines, but I don't think so. Masanamuthu will be utilized today, as Harish is there to raid if there is a requirement. And Hazira Sudhin, Dhanashekhar and Prabhakaran will be there on the substitution lines along with Ilavarasan, the coach. But Harshit, Periyar Panthers, they need to fire. जी बिल्कुल, पेरियार पैंथर्स को यहाँ पर फायर करने की आवश्यकता होगी और उनके फायरी खिलाड़ी यानी कि जिन्हें हम स्वराज के नाम से धीरे धीरे आने वाले समय में जाने जाएंगे वो होंगे शिवम अनिल, शिवम ठाकुर। ये खिलाड़ी जब से यहाँ पर पेरियार पैंथर्स में आया है थोड़ा धूम मचाना चाहती है ये टीम। अभिषेक नागर अंकित भाटी की जोड़ी को जज्बातों पर ध्यान रखते हुए अपने लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है और कृष्ण मावी को आज बताना होगा कि इनकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है। कुणाल भाटी को अपनी करिश्मेटिक फॉर्म में वापस आना पड़ेगा। नवनीत, इन्होंने पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, बेस्ट डिफेंडर बने थे, और गौरव बंसल इनका साथ निभाएंगे तो ये टीम नजर आती है। ऋषभ भाटी, अर्पित नागर, आशीष भाटी, ये दोनों अच्छे रीडर्स हैं, इनका यूज टीम कर सकती है। शोभित भाटी का भी, शुभम बेदूरी भी एक प्रॉमिसिंग यंग लैड है, बट उन्हें लगातार प्रदर्शन करना होगा नवीन। तो दोनों ही टीमें स्ट्रॉन्ग कहना चाहूंगा। पलनी कहीं ना कहीं एक अच्छे फॉर्म के साथ आ रही है, पर पेरियार पैंथर्स को अब एक अच्छी जीत की राह मिलनी चाहिए। Yeah, and also nice to see few bigger franchisee players coming in for the Yuva Kabaddi series. This is where they can actually nurture their skills, as Swaraj Tractors top 3 Raiders is led by Sudhakar, Stormy Sudhakar, 252 out of 22 and 188 Parvinder Pura, and of course Arjun Rati. We always see him there in the top 3 Raiders list, but generally his team does not do well. But Chola Veerans will be playing the next 9 p.m. game. Let's see if they can make that use of it. As Arshit, top 3 defenders. जी, स्वराज ट्रैक्टर्स टॉप 3 डिफेंडर्स की बात करते हैं तो आशीष, सहदेव मलिक, जिन्होंने पिछले मुकाबले में जरूर एक भी अंक प्राप्त नहीं किया, सब्स्टिट्यूट हो गए थे, बट 21 मुकाबलों में 97 टैकल पॉइंट्स और शायद ये पहले डिफेंडर बनेंगे जो 100 के मार्क को छुएंगे। गौतम भी अच्छी तरह से पीछा कर रहे हैं। कृष्ण नागर अब वहां पर शायद आपको आगे दिखेंगे नहीं पेरियार पैंथर्स के लिए, बट अब नवनीत पर दावेदारी होगी कि कृष्ण नागर रवि भाटी की जोड़ी को यहाँ पर मिस न होने दिया जाए। काफी लंबा जरूर उछला था सिक्का, पर ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा क्योंकि पलनी टस्कर्स ने यहाँ पर टॉस जीता है। नवीन, राइट हैंड साइड पर वो आपको टीम नजर आएगी। Yeah, absolutely. And I think Shivam Thakur, who actually played in the franchisee league, probably he will be coming in and raiding the first one. But time to watch out for Storm. It has to fire. It has to really make sure that the Storm is there in Puducherry. This last match was a tough one for him. He did not go well. And they really played a very, very tough kabaddi on him. But today, he would have come with different plans. जी, आज किस तरह के प्लान्स के साथ ये उतरेंगे ये तो आपको पता चलेगा धीरे धीरे आते वाले समय में। बट कुणाल भाटी अभी भी यहाँ पर पेरियार पैंथर्स की सबसे बड़ी कड़ी हो सकते हैं। 20 मुकाबले 154 रेट पॉइंट्स, लगभग 49 की स्ट्राइक रेट है। पिछले कुछ मैचेस में फेल होने के बाद भी अगर इनकी 49 की स्ट्राइक रेट है तो इनकी कितने की स्ट्राइक रेट सर्वाइवल और बूस्टर राउंड में थी, हमारे सभी दर्शक शायद जान सकते हैं। बट कुणाल भाटी अच्छा खिलाड़ी है, वी आर होपिंग की इंजरी से वापसी कर रहा है। बट किस खिलाड़ी पर सबसे ज्यादा दावेदारी है वो आप सभी को हमने बताया कि शिवम ठाकुर। वहीं एलेवरसन सर बहुत ही चाणक्य बुद्धि के साथ आते हैं, ये अपना पूरी गुरु ज्ञान यूज करते हैं। नवीन, Yeah, absolutely. On to the right side of us is the coach Ilavarasan and Krishna Yadav. Krishna Yadav is always there, but he is one of the more subtle of the managers. As Yogesh Nagar Saab, he comes in with always a different attire to the manager. He's come in with all the white color, and most of the cool and calm managers, I think Krishna Yadav is one of them, and also Parth Kapadia, isn't it, Arshit? They don't exhibit so much. जी बिल्कुल, और कहते हैं ना कि वो आपको जल और आग की जोड़ी कैसे बनती है वैसे यहाँ पर आपको नजर आते हैं क्योंकि पलनी टस्कर्स की बात करते हैं 22 मुकाबले इन्होंने कुल मिलाकर खेले हैं, 16 मुकाबलों में जीत। सबसे कंसिस्टेंट प्रदर्शन दर्शा रही है हम्पी हीरोज के साथ। ये टीम सिर्फ 5 मुकाबले हारे हैं, एक मुकाबला टाई खेला है और पिछला मुकाबला क्या टाई था नवीन। 2 बेहतरीन मुकाबले हमने टाई देखे थे, एक अगर पलनी का दिखा था तो हमने एक वहां पर पेरियार का भी देखा था। बट पिछले 5 मैच के फॉर्म कोई भी मैच ये हारे नहीं है, और पिछले 5 नहीं, मेरे मुताबिक शायद पिछले 10 मुकाबलों से ये कोई भी मुकाबला हारे नहीं है। Absolutely. And also Saktivel, who's come in after playing that Bengal franchisee, will add a lot of effort into that right corner. And then Periyar Panthers, look at that, very even Stevens, 2 tie, lost 10, won 10. They've been for 2 tie games, and I think one of them is also with the Palani Tuskers. So yeah, there we go, that 2 tie games,
and probably it will be really interesting how they go about this one, because they really want to make sure they finish in the top 6 or at least top 4. So let's get this match started and let's get down to the countdown. Lot of videos would have been actually seen for the Periyar Panthers, the match between Palani Tuskers and Aravalli Arrows. I'm sure the defense of Aravalli Arrows has taught a lot of things for Periyar Panthers as well, as I think Shivam Thakur, as expected, has made his way in the last game. He debuted. It's 24 points and he starts off. There we go, left corner, Velavan, and then the right cover. Oh, it's only one. It's only one. Luckily. कि क्या वहां पर एक ही पॉइंट बिल्कुल शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, 2 पॉइंट्स के साथ वहां पर शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। राइट कवर को भी वहां पर शिकार बनाया और शिवम ठाकुर ने यहां पर शुरुआत कर दी है। तो क्या नवीन यहां पर जो 11 मैचेस की अनबीटेबल स्ट्रीक है, यानी कि 10 मुकाबले जीत, पिछला मुकाबला टाई, क्या 12वें मुकाबले में जाकर पेरियार पैंथर्स उस स्ट्रीक को तोड़ सकती है? और मुझे लगता है कि युवा कबड्डी सीरीज की सबसे बड़ी वहां पर अनबीटेबल स्ट्रीक में यहां पर पलनी टस्कर्स ने अपना नाम पहले ही सीजन में दर्ज करा दिया है। अब सुधाकर रेड करने के लिए आए हैं, ये स्टॉमी सुधाकर हैं। आज क्या शिवम चलेंगे या फिर चलेंगे सुधाकर? अगर दोनों चले तो हमारे दर्शकों को एंटरटेनमेंट क्या भरपूर मिलेगा नवीन? Yeah, you are hell bent on making Palani Tuskers lose this game, Harshit. Yeah? Let them do their best, let them win, and let's see. See, I know that it's a long streak to have that win record. But every time in sport, there's always an equalizer that's waiting for you to come up. If the tide is going towards you, it will go against you also sometimes. You know, so there is where you will be really tested, as Palani Tuskers were tested by Aravalli Arrows in their previous tie game. As Sanjeevi comes in, kicks the covers. I think the right cover, probably Abhishek Nagar. जी, अंकित भाटी को वहां पर शिकार बनाते हुए एक अच्छी किक वहां पर लगाई। ये देखिए, बिल्कुल वहां से अपने आप को पीछे नहीं धकेल पाए सही समय पर। और किक संजीवी की इंपॉर्टेंस की हमने पिछले मैच में बहुत बात की ना नवीन, क्योंकि उनकी इंपॉर्टेंस अभी देखिए फिर से वो राइट कॉर्नर पर आपको नजर आ रहे हैं। इसके बारे में जैसे जैसे मुकाबला आगे चलेगा बात की जाएगी, पर देखते हैं क्या, क्योंकि शक्तिवेल ने इसलिए बदली है पोजीशन। क्यों बदली शक्तिवेल ने पोजीशन? इस वजह से राइट कवर पर इसलिए गए क्योंकि शिवम को वहां पर शिकार बनाना था। क्या प्लान के साथ वर्क किया है, मजा आ गया देखकर। Superb, really well coordinated, and Shaktivel probably wanting to attack because the right cover was not there, because Gokula Kannan was sitting outside on the bench, and he made sure there was that support that needed. As Sudhakar comes in, the storm has it picked up. No, it's not. He just wants to go back and see what best can be done. His running hand touches. See, defenders have understood that you should not attack Sudhakar. That's all. Very, very simple strategy. They've said, let's not attack Sudhakar. Let us just be together. Kunal Pati comes in for his first raid. And nice to see that Periyar Panthers, Yogesh Nagar Saab has brought in Shivam Thakur. See, that's what I wanted Kaziranga Rhinos also to do it. Oh, ho, ho, ho. He was blanked out. Kunal Bhati was completely blanked. And Shaktivel came back for a back hold. जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पर शक्तिवेल पिछली बार सिर्फ शिवम ठाकुर को पकड़ने के लिए राइट कवर पर मौजूद थे, और जो यहाँ पर लड़ाई है ना शक्तिवेल वर्सेस शिवम ठाकुर की आज जरूर होगी। शिवम ठाकुर और शक्तिवेल की लड़ाई में यहाँ पर शक्तिवेल ने जरूर उन पर अभी तक पार पाया है। पहली उनकी रेड में जरूर वो 2 पॉइंट लेकर गए थे, उसके बाद राइट कवर पर आए। तो माइंड गेम्स का आज बहुत बड़ा गेम हो सकता है। अब आया है, अब ये गौरव बंसल का टैकल आया है। ये पेरियार पैंथर्स भी जानती है और पलनी भी जानती है कि ये मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है। किक लगाना चाहते थे संजीवी, बट वहां पर गौरव ने अच्छा काम किया नवीन। Yeah, and also he went for both the legs. He made sure that Sanjeevi is a strong lad. He is not given any angle for him to kick away and go back. As Kushan Mawai, for him, he has to fire, because it's been a very, very dull moment for a player. You cannot have such a long period of dullness as a player. That is really important, that you need to make sure you put the right answer to the coach's question saying, why should I take you in the side?
And you need to do that very soon. And Krishan Mawai is a very, very talented player. Sudhakar. Now, where will he find answers? He's running and touches. It's not working. He has got that kick, and see, if the defenders don't come to him, he looks clueless. He really looks clueless. चलिए, बहुत अच्छी डिफेंस ने इस बार पेशेंस में काम किया। जरूर यहाँ पर ग्रीन कार्ड बड़ी जल्दी दर्शाया गया है नवनीत को। पिछले मैच में ये स्वराज ट्रैक्टर्स बेस्ट डिफेंडर रहे थे अपनी टीम के लिए, पेरियार पैंथर्स की टीम से, और पेरियार पैंथर्स ने जो है वो दोनों मुकाबले जो टाई खेले हैं, नवीन वो चोला वीरंस के विरुद्ध खेले, उनके पिछले दोनों के दोनों मुकाबले टाई रहे हैं। नवनीत को जरूर यहाँ पर ग्रीन कार्ड दिखाया गया है। अब देखते हैं कृष्ण मावी। बिल्कुल आपने सही कहा नवीन कि अगर आप लगातार शुरुआती साथ में खेल रहे हैं कृष्ण मावी, तो आपको अपनी पोजीशन को प्रूव करना बहुत जरूरी है। ये बात अच्छी है कि आपको अपने कप्तान और कोच बैक कर रहे हैं, बट ऐसे अगर आप धरे जाएंगे तो नवीन उसका कोई आंसर नहीं है। See, look at his footwork. It's so much out of confidence. There. Why is he bending? Even before the defense has come in, he surrendered. He surrendered himself into the tackle. Now, I don't understand when Periyar Panthers Yogesh Nagar Saab can bring in Shivam Thakur and Navneet Nagar so importantly into the side. I was wondering, why can't the Kaziranga Rhinos do it? Why can't the Kaziranga Rhinos understand that they need different players? That was my question even before that game. And look at this previous game, 52-point victory. Now, can that happen in Kabaddi? And Kabaddi does not have follow-on to have a 52-point victory. You could actually introduce a follow-on. Next time when they play Hampi Heroes, they'll say, okay, you just play with our 52 points. That's enough. Oh my God. No, that's not right, isn't it? That's not right for us. That's not right for anybody. And that's the first do-or-die raid of the match. Come to Stormy. He's not picked up a point. Now pressure. First time ever. You're watching Sudhakar trying to struggle for points. There, that struggle goes down with a proper back hold. That's it. चलिए, वो मोमेंटम को सबसे पहले यहाँ पर तेजी के साथ आकर तोड़ा और वो बहुत अच्छा बैक होल्ड। ये देखिए, यहाँ से सबसे पहले अभिषेक नागर ने आके उस मोमेंटम को तोड़ा। गौरव बंसल और अंकित भाटी यहाँ पर तेजी के साथ गए, बैक होल्ड किया। सुधाकर 4-4 का स्कोर। देखिए, पर नवीन कहीं ना कहीं कंसर्न पेरियार पैंथर्स के रेडर्स हैं, शिवम जरूर है, बट अगर शिवम को पकड़ा जाएगा तो रिवाइवल कैसे आएगा? अब शिवम फिर से कवर्स पर डबल डोज देने का प्रयास था। अभी कहां पर हैं शक्तिवेल? फिर से राइट कॉर्नर पर चले गए, इसलिए राइट कवर पर अटैक करने के लिए गए थे। और राइट कवर पर जो अब आपको खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, गोकुल अकन्नन, ये भी वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर है पलनी टस्कर्स के। नवीन, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास भी क्या काबिलियत है। इस बार नवनीत का एंकल होल्ड आया है और ये एंकल होल्ड का सक्सेस के साथ पेरियार पैंथर्स इस मुकाबले में अब एक और बार लीड करेगा। Yeah, strong ankle hold. See Navneet Nagar, he's come in. Look at that strong ankle hold, and then the covers. Even if the ankle hold was slipped out, the covers came into good position. And look at Navneet Nagar, he came in to take care of the dangling hand. Then the do-or-die raid now for the Periyar Panthers. First time ever for Shivam Thakur in this match, and he will be succumbed. Wow, that second line of defense was very, very strong. Velavan, for that matter, will get all the accolades. He will not get the points, but he will get the accolades for that. जी, यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा इंतजार करके आने जाना चाहते थे वेलवन। क्या बात है वेलवन, जिस तरह से वो आए, वो जो डैंगलिंग हैंड वहां पर जा रहा था मिड लाइन की तरफ, उसे रोका। और नवीन, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। देखिए, कुणाल भाटी अगर वहां मौजूद थे तो क्या डू और डायरेक्ट में शायद कुणाल भाटी को जाना चाहिए था? शिवम ठाकुर, हम अक्सर बात करते हैं, और खासकर समिट राउंड जैसे बड़े इंपॉर्टेंट राउंड में, जहां पर अगर 7वें 8वें पोजीशन की टीम को सिर्फ एक भी मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ उन्हें एलिमिनेटर जाकर खेलना है, और पेरियार पैंथर्स अभी थोड़ा नीचे की तरफ है, तो उन्हें मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पलनी टस्कर्स लगभग आपको नवीन टॉप 2 में देखेंगे। Yeah, I would have even said, even if Krishan Mawai was there, he should have gone in. Because that's a very clear rule. The team should understand that you should not put your top raider in a do or die raid situation, especially when there are only 5 defenders on court. और खासकर जब रिवाइवल नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर शिवम का बड़ा रिवाइवल आ नहीं पा रहा है। Correct. When there was Shivam Thakur raiding, it was only 5 members on court for the Palani Tuskers, and it was a do or die raid. I know if you can send in your top raider when there are at least 6 or 7 defenders, that's okay. At least you have the bonus open. But now, when you have only 5, you should not be sending in your top raider. And once again, Sanjeevi is being surrendered and tackled out.
जी Ankle नवनीत hold. का एंकल होल्ड, नवनीत का एक Yeah, और बार ankle hold. एंकल होल्ड। Yeah, now, is that not brutal attack? Look at that on the neck. Yeah. So we can't keep giving green cards and can't giving warning every defense tackle, isn't it? Right. Anyways, oh, turning of pages, Christian Mawai, fabulous. Where was this hiding? This had to come in, and Shaktivel has been turned the pages around. जी शक्तिवेल बड़े डिफेंडर को शिकार बनाया है, और जब आप में ये काबिलियत है, इसीलिए नवीन हम कृष्ण की बहुत ज्यादा बातें करते हैं क्योंकि उनमें काबिलियत की कहीं कोई कमी नहीं है, बट वो बिलीव करना, अपनी स्किल्स में, अपनी एबिलिटीज में बिलीव करना सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी टॉप खिलाड़ी के लिए। अब सुधाकर कैसे वो अपने फिर से बिलीव को जगह पाएंगे, इस खिलाड़ी की ये भी काबिलियत रहती है। इसे पता है अगर शुरुआती हाफ इसके लिए अच्छा नहीं जा रहा है तो ये सेकेंड हाफ में जिस तरह से कमबैक करता है, फर्स्ट हाफ के सेकेंड अगर आप हाफ की बात कर ले, यानी कि अगले जो 10 मिनट होंगे इनके लिए बहुत जरूरी होंगे, पौने 10 मिनट का समय शेष है, किस तरह से सुधाकर 6 के हाउस में बोनस चुराएंगे, शायद बोनस चुराया है। जी नहीं, I don't think so. Yeah, I don't think so because the turning bonus actually Sudhakar is not being confident about it at all. As Kunal Bhatti comes in, Sudhakar on that turning bonus, he was very good in the initial stages. Now see what is happening is, even as a raider, now there is so much of pressure on Sudhakar, because one, you have to maintain your stardom. 2, you have to maintain your team's cause, and 3, you will really need to keep up that momentum going. It's all about the game of momentum. Let this Ilavarasan now. நீ ஆடி ஆடி டயர்ட் ஆயிட்டு இருக்க. இங்கே ஆடு, ஓடவே ஓடாதேனா அடிக்க தான் அவாய்ட் பண்றாங்க, அதனால உள்ள நின்னு போனஸ் கட் பண்ணி ஆடு. Wow, exactly what I said, Arshit. Avoid பண்றாங்க, உன்ன அடிக்க வரல. That means the defense is not coming to attack you. Very simple. So the defense is not coming to attack you, you are running around and getting tired out. That's what Ilavarasan said, and he mentioned it as I said. So he says just stand there and just see if the defense can come to you. Don't tire yourself. Yeah, try the bonus. That's all he'll have to do. Beautiful anti-block. He pushed us out. Oh, he could have gone for another point. That's Tommy Sudhakar for you. He should have gone for other points. Yogesh Nagar Sahab is not happy. कि योगेश नागर साहब का वहां पर दुखी होना बनता भी, क्योंकि ये आवश्यकता नहीं थी यहाँ पर। नंबर 14 जर्सी अगर आप बात करें अंकित भाटी, तो आपको ये करने की आवश्यकता नहीं थी। लेफ्ट कवर सुधाकर वैसे ही थोड़ा सा वहां पर प्रेशर अपने आप में थोड़ा सा महसूस कर रहे थे, क्योंकि अगर टॉप रेडर्स को शुरुआती 3-4 रेड्स में पॉइंट न मिले, वो एम्प्टी रेड्स कर आया और अपना वो सर्वश्रेष्ठ दे रहा हो, तो जरूर थोड़ा सा वो सोच विचार करता है क्या मुझे अतिरिक्त करना चाहिए। बट इलेवरसन सर ने बिल्कुल जो दुखती रग होती है ना, उस पर वहां पर हाथ रखा। पेरियार पैंथर्स का डिफेंस, जहां पेशेंस उनकी थोड़ी सी कमी रहती है, जहां डिफेंस के लिए पेशेंस हमेशा की होती है, उनके कवर्स थोड़ा सा पेशेंस कभी कभार खो देते हैं। और एलिवर्सन सर ने वही कहा कि चलिए उनके पेशेंस को टेस्ट कीजिए। सुधाकर को पहला पॉइंट मिला, अब बोनस का प्रयास है। Yeah, absolutely. And there, sweeping toe touch and trying out. Now the defense is trying to attack him. He is on a roll. Is the Stormy Sudhakar bonus +1. Abhishek Nagar should go out. और फिर से वही खिलाड़ी, देखिए लेफ्ट कवर एक बार फिर से तेजी के साथ आया, पर इस तरह से आप कहां डैश करने जा रहे थे, मिड रेफ पर जाना चाहिए था। पर चलिए अब 6 का हाउस जरूर है, पर शिवम ठाकुर एक और बार यहां पर डू और डायरेक्ट में पिछली बार शिकार बनाया था। क्या वो कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, फिर से जाकर क्या बोनस चुराने का प्रयास करेंगे या फिर हैंड टच करने की कोशिश करेंगे। समय बीत रहा है, अंडर 10 सेकेंड इनके खिलाड़ी को टच किया। मुकेश कन्नन इतना हाई लाइन चले गए थे, वहां पर शिवम ने अपॉर्चुनिटी को क्लिक किया और एक अंक दिलाया नवीन। Yeah, and also the problem is if you don't retrieve back yourself, even you're putting the right corner into trouble. There, what was necessary for Mukesh Kannan to go in so advanced for the tackle? As Tommy has picked up his raids, he will be raiding. It's all about that momentum, isn't it? First you get that momentum and then keep on going. There, the anti-block, he pushed him out. He should have gone for more points. Why didn't he go for more points? Then the sweeping toe touch, then the bonus, and then Abhishek Nagar from left cover does not know whether to go for the dash or the block. Halfway mind, he got it. Now simple, he will be unstoppable. Tommy has started. He is unstoppable now. Navneet Nagar should go out. जी अब नवनीत को जाना होगा, टॉप डिफेंडर पेरियार पैंथर्स के, यहाँ पर उन्हें बाहर जाना होगा। नवनीत, कुणाल भाटी कह जरूर रहे थे कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, बट
यही जो वहां पर पेशेंस होता है, आप कितनी समय तक अपने पेशेंस को होल्ड कर पाते हैं। पेरियार पैंथर्स लगातार पिछले 3 पॉइंट्स और डिफेंस से अटैक करने गया है। सुधाकर ने वहां पर ज्यादा कुछ करने का प्रयास किया नहीं। शिवम देखिए वहां पर जैसे उन्होंने बोनस चुराया, वेलेवन को देखा था कि बैक होल्ड के लिए आ सकते हैं, उन्होंने अपने हाथ का उपयोग किया था। ये बताता है कि आप कितने गेम में अटेंटिव रहते हैं। शिवम और शक्तिवेल की लड़ाई की हम बात कर रहे थे नवीन, और साथ ही साथ सुधाकर और नवनीत की भी लड़ाई है, जिसमें अभी तक सुधाकर ने बाजी मारी है। Yeah, absolutely. And also making sure when Sudhakar is firing, Palani are in a very good place. When he's not firing, this is what happens. When they are firing, even Sanjeevi can go in and attack the left in player. So deep. Kunal Bhati. Oh. और देखिए अगर वो परफेक्ट राइट कॉर्नर नहीं है, क्योंकि वहां पर नंबर 14 जर्सी अंकित भाटी मौजूद है राइट कॉर्नर पर, जानते थे संजीवी कि वहां पर कब अटैक करना है। ये बहुत अच्छी तरह से रीड करती है पलनी टस्कर्स की गेम की जो रीडिंग कैपेबिलिटी है, जो वो रीड करती है गेम को बहुत अच्छे से, अपने एबिलिटीज को दर्शाती है। यहां पर लॉबी में गए हैं, राइट कवर गोकुल लक्कनन को शायद वहां पर जाकर शिकार बनाया है। एक बहुत अच्छा स्ट्रेच किया शिवम ने और 1 पॉइंट दिलाया। Yeah, again this is a Raiders point. This is a simple Raiders point where the defender is not retrieving back himself, and generally it happens when the Raider is very quick. Like Sudhakar, Shivam also is very quick. There goes for the kick on the left corner. Nice that they are staying back. And sometimes you even try to feel Gaurav Bansal does not come in. He's confident, or else he won't go to the lobby at all. Now I think Periyar Panthers want to review this. जी, क्योंकि वहां पर सुधाकर का मामला भी है, इसलिए शायद रिव्यू और पक्का हो जाएगा। इसलिए वहां पर कोचेस की तरफ से भी कहा गया है कि जाइए तुरंत वहां पर जाकर रिव्यू लीजिए, क्योंकि सुधाकर के अलावा शायद और कोई खिलाड़ी होते थोड़ा सा मुश्किल होता वो रिव्यू, बट सिर्फ 4.5 मिनट का समय विशेष बचा है। पर नवीन मुझे लगा कि शायद एक टच पॉइंट है, देखते हैं इसे बड़ा क्लोजली। Yeah, nice angle also. Top angle. Oh, Jersey flutter maybe, or is he not? Distance लगा? Yeah. और देखिए कुछ Don't think बड़े so. डिग्निटरीज भी नवीन वहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे। श्री कुलदीप दलाल जी, जनरल सेक्रेटरी अमेचोर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, श्री कुमार विजय सिंह जी, बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन, श्री राजेश सिंह जी, यूपी स्टेट कबड्डी एसोसिएशन, श्री चेतन जोशी जी, उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन। देखिए कुछ बड़े नाम आज यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं नवीन। Yeah, fabulous. In the background as well. If you look at the background of this frame, the extreme right is Kuldeep Dalal. Mr. Kuldeep Dalal, he is there, and also with our CEO Vikas, I think it's Chetan Joshi. Yeah. Mr. Chetan Joshi, who is sitting there, Uttarakhand Kabaddi Association General Secretary. Raiders 1 point. Palani Tuskers. Yeah, Raiders safe as Sudhakar will get his point on the running hand touch on Gaurav Bansal. Yeah, he's so confident, gets in and gets it into the lobby. See, again, the general secretaries of all the big state kabaddi associations are coming in here with a big heart and a big support for all the players to get into the 1 nationals, 2 the franchisee, 3 the country. See, there is so much scope, and when you have so much scope, there is where I feel really concerned and worried for Kaziranga Rhinos as a team. How can you make sure your name in the challenger round, which will definitely go through the summit round now, when you play that eliminator 1, if you are the team that has been finishing on 7th or 8th and you lose that match, you're out. So how do you prove yourself that in the challenger round you've done so well when you have a 52-point different loss? No, Harshit, that is my biggest concern. And everybody, apart from this season of the winter edition, I think everybody has put up a fight and made sure their existence is proven. It's not that they've just come in via luck or via somebody not doing well. Every team has done well, and for Hampi Heroes to come and do well as a second time in a row for a defending champion, that shows what a defending champions actually are. They really want Kaziranga Rhinos to fire.
एक्चुअली आपने जिस पॉइंट पर यहाँ पर बात पहले की है टूट का मत उस पर भी देना। बात करेंगे, पर सुने, पहले यहाँ हाँ, सुनते जब हैं। बिल्कुल अंदर मारे है, जब बिल्कुल वहाँ मत छेड़ देना उसे, सुनना मेरी बात। जब बिल्कुल अंदर मारे है, टाइम है, आई डोंट टाइम है, चढ़ाई का मार लो इधर, ठीक है, इधर बिल्कुल बैंड होकर खेल रहे हैं, ठीक है, सुनना मेरी बात है। I think it's all against Tommy. बोलिए मैं समझा, All against Tommy. Either is सुनना मेरी there. बात, उधर एडवांस Well, the right टाइम corner. शिवम, सुन मेरी बात, सुन, Yeah. तू चल के मार ले कवर पे, चल के मार ले, सुन, बोनस तू सेकंड का बोनस टेक और चल के मार ले, ठीक है, पॉइंट मिलेगा बेटे। चलिए Okay, तो इनकी Shivam पोजीशन also के given नीचे a- से पहले बोनस चुराने को और कवर पर अटैक करने को कहा गया है, बट पहले सुधाकर से बचना बहुत जरूरी है। सुधाकर Correct. के विरुद्ध शुरुआत में ही योगेश नागर साहब ने कहा कि थोड़ा सा पीछे रहकर खेलिए, पर जितना आप डरेंगे, जितना मतलब आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मुझे लगता है सुधाकर जैसे रेडर और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं जब आप उनसे बचने जाते हैं। Correct. When you go too deep, it is like you are giving an open invitation. देखिए। There, that's what happened. That is what happened. Live example in front of our eyes. You can't play too deep also for him. ये देखिए कितना डीप। अंकित और अभिषेक Yeah. नागर दोनों कॉर्नर्स थे, वो कवर्स की जोड़ी पर रहते हैं अक्सर। एक और डू और डायरेक्ट, पहली डू और डायरेक्ट मैंने शिकार बनाया था, दूसरी डू और डायरेक्ट में टच पॉइंट लेकर आए थे अपनी टीम के लिए। अब टच पॉइंट की या फिर बोनस की सख्त आवश्यकता होगी, अन्यथा शिवम भी बाहर जाएंगे। और नवीन, अगर शिवम बाहर जाते हैं तो ऑल आउट से नहीं बचा पाएंगे। पहलवन की यहाँ पर बैक होल्ड आई है, डाइव लगी है और शिवम ठाकुर को बनाया है इन्होंने अपने चंगुल में शिकार। That grunt, that sound of before you go for the capture, that shows how much of an effort Velavan had put into that back hold. Oh my God! Now super tackle situation on. You have Shobit Bhatti coming in place of Krishan Mawai. So that's really a defender coming in to stop Sudhakar getting in that all out. And Sudhakar, we've seen always in a super tackle situation, and especially when a defender comes out from the bench, I'm hoping Shobit Bhatti, should not go for the attack. But no, he goes in for the other way. Abhishek Nagar, I think, has to go out. जी बाहर जाना पड़ेगा यहाँ से, अब बाहर एक बार फिर से अभिषेक नागर को भी जाना पड़ेगा। सिर्फ इकलौते खिलाड़ी अब शोभित भाटी रह जाएंगे, सब्स्टिट्यूट किया जरूर जाएगा। पेरियार पैंथर्स रेडर को बुलाना चाहेंगे क्या, शायद शुभम बेदूरी आएंगे या फिर कृष्ण मावी वापस आ रहे हैं। कृष्ण मावी यहाँ पर क्या अपनी टीम को रिवाइवल दिला सकते हैं, एटलीस्ट कम से कम बोनस तो इस रेड से चुराना चाहेंगे। पलनी टस्कर्स आगे बढ़ रही है। और नवीन, जो हमने बात की थी ना कि डू और डाई रेड में अगर शिवम ठाकुर पकड़े जाते हैं तो बिल्कुल ऑल आउट की तरफ धकेल दिया जाएगा पेरियार पैंथर्स को। देखिए बिल्कुल वो रिवाइवल, कब वहां पर कुणाल बाटी बाहर गए थे उनका, उसके बाद रिवाइवल हुआ नहीं है। बोनस बड़ा इजी दे दिया है। विलवन के पास जाकर क्या टच पॉइंट लाने का प्रयास करेंगे या फिर कवर पर मारना चाहिए नवीन? No, I don't think so. The defense will not go to him. See, under 10 seconds now, Krishan Mawai is under pressure. That's it. Even though you come and stand near the end line, the defense will not come to you. Oh, that was close. That was very, very close. Somehow they got it. It was very close on that number 4 coming in so close there. ये देखिए जिस तरह से ऐसा लग रहा था कि वो भरत मिलाप कर रहे थे, काफी दिनों काफी समय बाद वो ऐसा लग रहा था मिल रहे थे। पर वेलेवन क्या बात है, ब्रूचुअल फोर्स लगाते हैं वो बुलडोज कर देते हैं रेडर्स को, जिस तरह से शिवम ठाकुर जैसे ताकतवर रेडर को, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही अद्भुत है। शोल्डर पावर हम जान चुके हैं और ये रेडर हमेशा मुझे वो जय भगवान की भी याद दिलाता है। बिल्कुल जय भगवान की जो थाइस में ताकत है और थोड़ी सी जरूर वैसी थाइस इनकी भी नजर आती है, वो शोल्डर पावर थोड़ा वैसा नजर आता है। बट अब मुकेश कन्नन गए हैं, अब 7 का हाउस है। एक बार फिर से नवनीत का ना रिवाइवल हो पाना, न गौरव बंसल का रिवाइवल हो पाना। नवनीत ने एक बार फिर से गलती की है, कितने समय के बाद मैच पर आए थे, पुनः बाहर चले जाइए नवनीत। Again, see the problem there. See, this is what happens with the defenders. Always, when you're not getting the momentum right, you want to go for that momentum, and that's not right. And that's the halftime score. We didn't even realize that it's going to be 20 minutes gone so soon. And Palani Tuskers, once again, why are they leading? Is because of Swami. He's picked up 10 raid points and 6 tackle points. Very, very nicely in tune with this match as well. And Periyar Panthers, will they be able to come back? Because we haven't seen any team coming back on Palani Tuskers and winning. Let's see if Periyar Panthers can change that momentum. We'll slip in a short little break and come back soon.
Welcome back, everybody. Stormy, he has picked up and in like a what a fashion. There, I love the way he pushed the defender across, but he should have gone in for more points. As just that momentum, it's all about the momentum, isn't it? It's a lull before the storm, and when the storm comes in, Palani Tuskers are always flying. I'm Naveen Chaudhary, and alongside with me is Harshit. Harshit, I was speaking about no team has come back after Palani Tuskers take the lead. This team knows how to maintain that lead. They do not let go of the lead very soon. So the Aage ka rasta, we've even actually forgotten to speak about the Aage ka rasta for Periyar Panthers because of the storm. Yes, one, because of the storm, and two, the defenders are trying to attack him. See, the best way is what Aravalli Arrows did. See, it's not that we don't like Sudhakar picking up points. It's always that we like to speak for the underdog. And the Aage ka rasta is generally for that, as Kunal Bhati has come in. So the defenders of Periyar Panthers should understand and take a leaf out of Aravalli Arrows' book. See, you had Rajendra Bakar, you had Lokesh Gosalia, you had three extra defenders there. But when you have Gaurav Bansal, have Kunal Bhati got his hands? Yeah. I think he has on Velavan. Yeah. और ये है कुणाल भाटी, ये वो सर्वाइवल राउंड वाले कुणाल भाटी आखिरकार हमें काफी समय के बाद नजर आए। देखिए जो स्लाइसिंग पॉजेस वहां पर लिए, यानी कि उससे पता चलता है ये डिफेंडर्स के लिए वहां पर तैयार भी थे और ये वो ललक थी, वो डेस्परेट नजर आए। और नवीन आपने बिल्कुल सही कहा कि वो लोकेश गोसले और राजेंद्र बाकर जरूर पेरियार पैंथर्स में नहीं है, बट पेरियार पैंथर्स को वो सॉल्व आउट करना होगा, क्योंकि सुधाकर के विरुद्ध अगर आप हैं, नवनीत फिर से वापस आए, या तो आप वो कॉम्बिनेटिव अटैक के लिए जाएं या फिर आप थोड़ा इंतजार करें, खासकर सुधाकर को ईजी बोनसेस न दें और उन्हें डिफेंडर्स के पास आने दें, आगे अटैक करने ना जाएं। पर यहाँ तो इजी बोनस दिया है शायद। Yeah, see, that's the first bonus point for him in this match. So that means he is confident. That means he is going for it. Kunal Bhati is coming, and now because there is no Velavan, Sanjeevi holds fort. Such an important player. Sanjeevi, oh, back hold! Pull him in! Wow! Where was the support? What were they even thinking of? Yogesh Nagar Saab is shell-shocked with the tackle. जी देखिए कुणाल भाटी यहाँ पर देखिए वो कभी कभी ग्रीडीनेस होती है एक्स्ट्रा पॉइंट की। यहाँ देखिए यहाँ जो पावरफुल टैकल वहां पर दर्शाया और पूरी तरह से कुणाल भाटी को एक इंच भी वहां पर और आगे नहीं जाने का मौका दिया पलनी टस्कर्स। जो नवीन हम उस बात पर वापस आते हैं कि पलनी टस्कर्स एक बार लीड में आ जाने के बाद किसी को वापस आने नहीं देती है, जिस तरह से हम समर एडिशन में हम पेरियार पैंथर्स को देखा करते थे, वो आशीष नरवाल हो या फिर प्रतीक दहिया की वो काजीरंगा राइनोस, आशु मलिक, वो मुरथल मैग्नेट से, ये तीन टीम भी ऐसी थी जो अगर एक बार आगे बढ़ जाती थी तो पीछे मुड़कर देखा नहीं करती थी। पर अब पेरियार पैंथर्स को वैसा ही करना होगा। चैलेंजर राउंड उनके लिए इतना बेहतर नहीं जा रहा है। क्या समिट राउंड में समर एडिशन वाली पेरियार पैंथर्स नजर आ सकती है? लगातार मैचेस जीत के फाइनल तक क्या पहुंच सकती है? ऐसे नहीं पहुंच पाएगी। Yeah, that will be watched out for. But look at this for the speed. He watches the left cover come in from a distance, and he's always ready with the escape route. I haven't seen. I'll tell you something. Dash is not a right weapon against Sudhakar because he's very, very agile. He's slippery. There again, block, but crosses it. That's okay as one defender goes out to Shaktivel. But talking about Sudhakar, the dash will never work out against him because if you see even Aravalli Arrows, Harshit, if you remember that game, yes, even me and you were there, I guess, for the tie game. Everything Rajendra Bakar did was the ankle hold. Everything he put in was the diving back hold, like the Velavan diving back hold, his signature move. And the covers coming in for the block and not dashing him. You cannot dash him. There, again. 2 more points. I think the super raid. I think he's got a bonus also. Number 7, 13 out. No, he should have. I think he got a bonus also. चलिए यहाँ पर 2 अंक तो निर्धारित हैं, ये तो पक्के हैं कि ये 2 अंक तो बिल्कुल उन्होंने प्राप्त किए हैं। और नवनीत देखिए इनके विरुद्ध बिल्कुल आपने सही कहा नवीन की वो डाइविंग एंकल होल्ड, जो डबल थाइज होल्ड, जिस तरह से राजेंद्र भाकर ने इन पर अटैक किया था। और इस बार क्या टच है? ओ यहाँ पर शायद टो टच बड़ी आसानी के साथ शिवम ठाकुर ने किया, बट शिवम ठाकुर को वो साथ चाहिए कि और कोई भी पेरियार पैंथर्स के लिए एटलीस्ट पॉइंट ला पाए या फिर पॉइंट न दे लगातार।
और वो कब हो सकता है जब आप सुधाकर को बाहर करेंगे। जब तक सुधाकर रहेंगे नवीन, तब तक वहां पर पॉइंट लगातार आते रहेंगे। क्या उनको साथी के प्रेशर बना सकते हैं, जैसे मुकेश कन्नन को यहां पर पकड़कर क्या थोड़ा सा प्रेशर में ला सकते हैं? पलनी को मुझे लग नहीं रहा है यहां से। No, it's on the defenders. It's on the defenders. You saw what was the score on the first half was. It was only 6 tackle points. So that means the defenders have not done well. Now he wants him to go inside the lobby. And Mukesh Kannan is completely confident. If Periyar Panthers want, they can go for the review. It's against, I think Abhishek Nagar. No, he does not go for the review. He keeps quiet. As once again, Shivam Thakur. See, this is nice. Wherein, even if you're playing the franchise, oh my God! Now Gokula Kannan is getting into the ego mode. Ilavarasan will not like it. That's the second time he's got out for Shivam Thakur. There, no block, no dash, no idea. Get out of the mat. That's what he says. ये बहुत ही अच्छी वहां पर रीड पॉइंट लेकर आए। थोड़ा सा प्रयास जरूर किया था वहां से राइट कवर ने। शिवम को जरूर लगातार या तो पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि वो उनके पास एक मार्जिन भी है कि सुधाकर लगातार पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। कुछ अगर डिफेंसिव पॉइंट चले भी जाते हैं तो वहां पर बहुत अच्छी तरह से रिवाइवल तुरंत वहां पर सुधाकर कराते हैं। ये एक परफेक्ट पोजीशन है कि 5 के हाउस में सुधाकर, क्योंकि वो लगातार आपको रेड पॉइंट्स लाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। एक बार फिर से देखिए, लेफ्ट कॉर्नर को जाकर टच किया गौरव बंसल को, शायद इस बार जाकर शिकार बनाया। देखिए कहां जाकर अपने आप को एक्सेलरेट करते हैं नवीन। Yeah, again got his super 10. No time. Sudhakar, the storm is back. See, again, as a defender, what should coaches actually try and do is, again, Shivam Thakur targets Gokula Kannan. I think Gokula Kannan is having a tough time. That's the third time consecutively. See, now he does not go to attack the Raider. It's just that the momentum of the Raider that he's got against one defender. You keep on targeting him. The right cover, and he's got his point again. So yeah, just going back to Sudhakar, yeah, if you notice what Rajendra Bakar used to do, he never used to retreat back and he never used to run back. When Sudhakar was running towards him, he used to go for this. Such a beautiful tie hold. This is what they did. Kunal Bhati now does it against Mukesh Kannan, who is very slow compared to Sudhakar. But Kunal Bhati got that tie hold. And also remember, the left cover for Aravalli Arrows was Nitin Kumar when they played that tie game. Nitin Kumar and also Navpreet Singh. More than Nitin Kumar, it was Navpreet Singh who got those single tie holds on Sudhakar. So that was a battle between them. Oh, that's a strong block by Shaktivel. He's been pushed out. जी, शक्तिवेल ने इस बार डबल थाइज पर गए। देखिए नवप्रीत की हम बात कर रहे थे, ऐसे ही कुछ टैकल्स राजेंद्र भाकर के आपको नजर आए थे, जिस तरह से वो अपने आप को पीछे नहीं कर रहे थे। एक जो उन्होंने पहला टैकल किया था वो कॉर्नर की पोजीशन से किया था, और लेफ्ट कवर लोकेश घुसलिया जो खेल रहे थे, क्योंकि नितिन कुमार वहां पर राइट कवर खेल रहे थे और लेफ्ट कॉर्नर लोकेश और राजेंद्र भाकर लेफ्ट कवर पर थे। ऐसे टैकल्स की आवश्यकता है, ऐसे सपोर्ट की आवश्यकता है। सोलो टैकल्स के लिए आप सुधाकर को नहीं चाहिए, हमेशा वहां पर कॉम्बिनेशन में जाइए। Again, see what happened. It was not the dash. It is the block. You cannot dash him. No, it's a very simple process. Ankit Bhati came in with the block. You see, that's what I said. You cannot dash Sudhakar. When you go for the dash, he will be ready. He knows that, the defender is coming in and he can see you from a kilometer's distance that you're coming for a dash. And when you can block him like that, nothing like it. And that's a strong block. Now Gokula Kannan gets his point, but not against Shivam, I think. जी नहीं, कुणाल भाटी को वहां पर शिकार बनाया। फिर से कुणाल भाटी उसी सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, थोड़े से वहां पर प्लान और एम्प्टी रेड वहां पर कर सकते थे, क्योंकि पिछली रेड में यहाँ पर ग्रीन कार्ड जरूर दिखाया गया है। किस खिलाड़ी को दर्शाया गया है? वेलवन, ये भी काफी वहां पर चर्चित रहते हैं हमेशा। वो रेड ड्यूरिंग द रेड थोड़ी वार्तालाप करते हैं, और जो उन्होंने बात की थी ना आपने, वो दहाड़ते बहुत अच्छा है और वो पसंद है। और वो देखिए पलनी टस्कर्स, जब हाथी भी देखिए उनकी जो चिंगाड़ होती है वो एक ऐसी होती है कि जंगल में देखिए एक शेर की दहाड़ होती है और एक एलिफेंट की चिंगाड़ होती है। और इस बार पलनी टस्कर्स के मुकेश ने बताया कि जिस तरह से उन्होंने एक और टच पॉइंट प्राप्त किया है, गौरव को एक बार फिर से बेंच पर जाना होगा। Again, I'll tell you something. The running hand touch, I think, was not so confidently done by Mukesh Kannan. It's all on the ankle hold attempt by Mukesh Kannan, where he got a big portion of Mukesh Kannan there. Now Krishan Mawai, he has to do something more than that. He really has to do something more than that.
Now let's watch Sudhakar. Now it is all on Abhishek Nagar. Just watch Abhishek Nagar and Ankit Bhati. It depends on them. It's not on the right corner. It depends on these two lads, number 14, number 13. When they can go in with the chain and block him. If you run back, he will come and attack you. That's what happens. Now, that is where you can't nab him down. That's the storm. You can't push out a storm. You need to just block it. वापस वहां पर गए कृष्ण मावी। देखिए फिर से शिवम ठाकुर का वहां पर रिवाइवल नहीं आना। क्या इस बार किक लगाने का प्रयास यहां पर किया था कृष्ण मावी ने? पिछली बार बोनस जरूर इन्होंने चुराया था। क्या बोनस से ज्यादा कुछ करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि बोनस आपको रिवाइवल नहीं देती है। बोनस आपको डू और डाई रेड आगे की तरफ धकेलने का जरूर मौका देती है, बट डू और डाई रेड जब आएगी तो मुश्किलात होगी, क्योंकि आपके लिए वहां पर शिवम ठाकुर नहीं है, सिर्फ कृष्ण मावी एक रेडर वहां पर मौजूद है। और कभी भी उनका रिवाइवल जब हुआ है तो अक्सर ऑल आउट के बाद हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है शिवम ठाकुर को संजीवी रेड पर। फिर से अभिषेक नागर और अंकित भाटी एक तरफ, नवनीत नागर और कृष्ण मावी एक तरफ। Yeah, and the next raid is a very tricky one. If Sanjeevi goes back empty-handed, which he will always, next raid I do not want Sudhakar to come in. If Sudhakar comes in, that's the aage ka rasta, because that's going to be the do or die raid. In the next raid, I will really want Mukesh Kannan to go in. No, Palani Tuskers, you're making an error. You are making an error. If Sudhakar gets tackled out in this raid, it is tough time now for the Palani Tuskers. They will let go of a strong 10-point hold. It will be very difficult. If Sudhakar does not pick up a point, which he looks he cannot, under 10 seconds the defense will not give him anything. Now that is a wrong error. He will be tackled out. I told you he will be tackled out. Come on, you don't have to be an astrologer for this. इस बार ट्रैप में फंसाया था यहाँ पर सुधाकर को। बिल्कुल आपने सही कहा नवीन की, जहां सुधाकर को अटैक करने नहीं जा रहे थे, जंप जरूर लगी थी बट वो मोमेंटम ब्रेकिंग जंप थी, और उसके बाद अंकित भाटी और अभिषेक नागर ने पूरी तरह से इस सिलसिले को तोड़ने का प्रयास किया। चेक का हाउस है शिवम ठाकुर, इस बार डुआ डायरेक्ट बोनस चुराने का प्रयास, वेल लेवन और राइट कवर, पावरफुल टैकल। वही गलती नवीन ने यहाँ पर की है, किसने? पेरियार पैंथर्स ने, शिवम ठाकुर को डुआ डायरेक्ट में भेजकर। Again, he wanted to get the bonus and run away, but Velavan, look at that grunt. Look at the shout that he puts in before he goes to the attack. You know, he reminds me sometimes of what's that character in Lagan movie, where Goli, before he delivers the ball, there'll be a huge grunt. Like that, there's a grunt, no? So like that, he shouts first and then goes for the tackle. I think the Raiders must watch out for that grunt first. He just completely shouts and then goes for the tackle. Velavan. और देखिए अब ज्यादा समय, देखिए चलिए अभी स्ट्रेटेजिक टाइम आउट से पहले यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ समय है, कोचेस बात कर रहे हैं। देख लेना मेरी तरफ बोनस है तो ठीक है, सुना कुछ मत कर, कवर सुना, अगर कवर चल रहा हो कवर पर टैग तो मान ले, एक आध हाथ खोल के पॉइंट पकड़ नहीं हो जा, और सुनो इधर कॉर्नर टू कॉर्नर खेलो पूरा, ठीक है? सुना ए पॉइंट दो भाई, अंकित सुनो वो कोने पर मारा है, सेकंड शूट जैसे कोने पर मारा है, सेकंड शूट ट्राई मार ले, थाई में बोला सेकंड शूट, हाँ सेकंड शूट, सुनना मेरी बात, सेकंड शूट ट्राई कर ले कृष्ण बेटे, बोनस प्लस அடுத்த ட்ரை பண்ணு, கடையில அடுத்த ரைட் அவன விடு. Okay, right, I could hear only அடுத்த raid try பண்ண means you try the next raid, if not then leave another one. I don't think so that was being told to Sudhakar. I think that was being told to Mukesh Kannan. Let's see. So finally somehow that do or die raid did not cost much, because the defense of Palani Tuskers has revived Sudhakar back on the mat, and no bonus. और बोनस के लिए अपना रिव्यू गंवाना भी नहीं चाहेंगे। they don't want to take a review now. जिस तरह से मुकाबले की पेस बढ़ रही है, 9 पॉइंट की लीड पलनी टस्कर्स के पास है, पर अंत में जाते जाते शायद मुकाबला ये थोड़ा सा क्लोज हो सकता है, सुधाकर भी जानते हैं, इसलिए यहीं से लीड को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये काम बहुत अच्छा करती है पलनी टस्कर्स की, उन्हें पता है कि कब गेम को स्लो डाउन करना है और कब गेम को आगे की तरफ बढ़ाना है। यहाँ पर लगातार बढ़ाना चाहती है, इसलिए सुधाकर एक और रेड के लिए, पर अब एम्प्टी रेड, थोड़ा सा प्रयास किया, जानते हैं कि ये दोनों कॉर्नर्स हैं वो उन पर अटैक के लिए जा नहीं रहे। ये माइंड गेम भी बहुत अच्छे से खेलती है पलनी, बट अब कृष्ण मावी को टच पॉइंट लाना ही होगा। And who is the master of that mind game? It's all Ilavasan. Yes, very much. See, that's what he said. நீ அடுத்த raid try பண்ணே இல்லனா அவனை விடு. Simple. He just said, Sudhakar, go in for this raid. If you don't get it, leave the other raider for the next raid. I think now in a super tackle, I think Sudhakar is asking Ilavasan, can I go? Oh my God, did you watch that frame? Forget the tackle, it was fabulously done by Gokula Kannan with the block. If you had seen Sudhakar, he was actually asking Ilavasan, can I go for the raid?
because it is a super tackle situation. And I think now it is the Swaraj Tractors strategic timeout. Yeah, probably that will break some momentum. And let's listen to, I think Yogesh Nagar Saab. He has got a lot of talking to do. We should listen to him. Okay, Ilavarasan. 30 செகண்ட்ல ரைட் ஆடாது, ஃபர்ஸ்ட்லயே ஆடு. நான் ரொம்ப நேரம் ஆடாது. ஒரு பாயிண்ட் தொட்டு அடுத்து அடிச்ச லோன் போட்டுக்கலாம். என்னன்னா 5 நிமிஷம். Yeah, he's just keeping it cool. He just says don't play 30 seconds of the raid. डायरेक्ट अंग में कट कर. सुनना मेरी बात. Okay, now. कोने पे मार के सेकंड से कार्रवाई कर रहे हैं. एक सुपर टैकल बना लो. भाई मेरी एक फुट बड़ा से हाथ हमको दो. डेमो पे नहीं मारे. हाथ हमारे डाई. सुन ए भाई, जब कोने पे मारे, जब कोने पे मारे सेकंड से कार्रवाई कर ले. हां. नहीं. लेकिन जब तक कोनो कार्रवाई न करना, ऐसे बीच में मत छेड़ना तुम. ठीक है मेरी बात. सुनो, बहुत सही बात. यहाँ पर योगेश नागर साहब कह रहे हैं कि एडवांस कार्यवाही करनी नहीं है, इनकी पोजीशन से टैकल करने के लिए थोड़ा सा कह रहे हैं. और नवीन जोश का राज सुधाकर, पलनी के जोश का जो राज है वो सुधाकर बिल्कुल है. शुरुआत उनकी एक बार फिर से थोड़ी सी फीकी रही थी, पर ये खिलाड़ी कुछ ज्यादा शुरुआत से फर्क पड़ता नहीं. कौन आ रहा है? बिल्कुल सुधाकर आ रहे हैं. सुधाकर को कहा है कि एक्स्ट्रा आपको अटेम्प्ट लेने जाना. डू और डाई रेड है नवीन, क्या कहेंगे इस डू और डाई रेड के बारे में आप? Again, ankle hold. I think he's got all 3 points. Oh, that's a super raid and an all-out. Storm is here in Puducherry, and it is struck the seashores like a big volcano. क्या बात है, ये सुधाकर जो प्रदर्शन अपनी टीम के लिए कर दिखलाता है, ये आम लगता नहीं है. साधारण प्रदर्शन इनका कभी नजर आता नहीं है. ऑनेस्टली ये खिलाड़ी एक नया खिलाड़ी है. ये पराजित कर देता है इकलौते तौर पर विपक्षी टीम को, और आज भी यहाँ पर यही व्यतीत होते हुए दिख रहा है. सोलो वन मैन आर्मी की तरह खेलता है. Yeah, see the problem. I was about to mention something, and we got that super tackle on in that moment as Shivam Thakur comes in. See, the problem with Yogesh Nagar Saab is whichever team he coaches, he allows the players to talk too much. The problem is that as there's a weak tackle by Shakti Vel, there was no Shakti at all in that tackle. Now the problem is he allows the players to talk too much and exhibit too much. See, it's okay, listen to their plans and ideas, but at the end of the day, you should be the boss and you should make that final call. See, in that super tackle, there was so much confusion. Oh, he wanted to bulldoze it through. No, Sanjeevi will not be able to do that. Anti-block. See, Yogesh Nagar Saab. नवनीत ने सबसे पहले आकर वहां पर फ्रंट ब्लॉक करने का प्रयास किया. उसके बाद देखिए पूरी टीम, कृष्ण मवाई भी गए, साथ ही साथ अभिषेक नागर. अब एक ही आगे का जो रास्ता है पेरियार पैंथर्स के लिए कि पलनी टस्कर्स को जल्दी से जल्दी पहली दफे ऑल आउट करें, क्योंकि नवीन देखिए अगर मुकाबला हार रही है डिफरेंस ज्यादा मैटर करेगा नहीं. अगर आप 7वें 8वें पायदान पर समाप्त करेंगे तो आपके लिए कुछ भी बड़ा वहां पर मोटिवेटिंग नहीं रहेगा. इसलिए आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए कि ज्यादा ज्यादा 5वें 6ठे पर आप समाप्त कर पाएं. और वो कब समाप्त कर पाएंगे? जब आप अच्छी तरह से पॉइंट्स लाएंगे, ऑल आउट की तरफ धकेंगे पलनी को, कुछ अंक अर्जित करेंगे इस मैच से. For that you will have to see why is Palani Tuskers done so well, because they listen to their boss. It's very simple. Ilavarasan, the coach, is simply the boss of the team, and it's not because he is bossy, it's because he is brainy. There, Sanjeevi can sit there and laugh and enjoy this raid because he's listened to his coach. And for me, Yogesh Nagar Saab, that's what I said. He should not be Yogesh Nagar, he should be Yogesh Jangir. He's very sweet. As we have that Jangir Jalebi as what we call, you know, there's a different name here. We call that as Jangiri, right? That's what is very sweet. चलिए एक और बार, एक और अनसक्सेसफुल रेड. इस बार गोकुल लक्कनन कह रहे हैं कि पहले हाफ की जो कहानी थी वो कुछ अलग थी, पर इस हाफ की कहानी मैं लिखूंगा. देखिए यहाँ पर आकर फिर से बुलडोज करने का प्रयास जरूर किया, एंटी ब्लॉक जरूर करना चाहते थे वहां से शिवम अनिल की, इनकी फोर्स को कम किया जाए, बट गोकुल लक्कनन के बाहुबल, उनके बाजूबल ने फिर से शिकार बनाया. और अगर पेरियार के लिए शिवम अनिल बाहर हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है. पॉइंट लाना, पूरी टीम टूट पड़ती है. Mukesh Kannan now does the anti-block. 2 points. One on the hand touch of the left cover, then on the anti-block for the left corner. Beautifully done. Now it's going one way. It's just going the Palani way now. And how much of an effort that you can put in from the coach's bench when you do not have people listening. This is what happens. And again, you just go back to that instant of saying, okay, I have the authority.
You just need to listen to me. That sort of a thing should come in from Yogesh Nagar Saab very, very soon. Yeah. He's very good as a coach. He's very, very good. But sometimes he's a little sweet. Actually, Naveen, बिल्कुल. Yeah. क्योंकि That वो super एक- tackle. See, if the players would have listened to him, it wouldn't have been an all-out. They had different ideas saying, I will go in with the chain tackle. And Yogesh Nagar said, no, don't do it. From the right corner, don't go and attack him. And when they went into attack, they got the all-out. And 15 raid points for the Storm today. And one super raid in 23 raids. As there is some breaks that's been given. और आज बहुत सारी रेड्स लगाई है, 23 रेड लगाई है, यानी कि इससे पता चलता है कि उनका स्टैमिना और लगातार रेड लगाने का उनके पास वो काबिलियत कितनी अच्छी है. कृष्ण मावी देखिए, कोई भी शिवम अनिल के बिना, देखिए पलनी की बहुत सारी बातें हमने की और पलनी जो है वो टॉप 2 में समाप्त भी करने वाली है, यानी कि सिर्फ उन्हें एक मुकाबला जीतना है फाइनल, उसके बाद वो बिल्कुल पहुंचते हुए दिखेंगे. और अगर हारती भी हैं तो उनके पास बहुत सारे मौके रहेंगे, क्योंकि नवीन जो हमने पहले और दूसरे रैंक की बात की, अगर उनके पास हारती भी है तो उनके पास 4 चांसेस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे. तो इससे बेहतर कुछ है नहीं. और जो तीसरे चौथे पायदान पर समाप्त करेगी टीम, उनके पास 2 और मौके, यानी कि 2 और हार भी अगर वो झेल लें तो भी उसके बाद उन्हें आगे जाने का मौका मिलेगा. और 5वें छठे की अगर हम बात करें तो एक मुकाबला अगर वो हारेंगे, यानी कि क्वालिफायर नंबर 3, उसके बाद भी उन्हें सीधा एलिमिनेटर में जाने का मौका मिलेगा. तो इससे पता चलता है कि आपकी स्टैंडिंग कितनी ज्यादा जरूरी है. No, that is the big effort of playing so well. And now Krishan Mawai. Oh, it was actually Velavan going down very early, Harshit. Just watch him, how early he goes down. And Krishan Mawai was prepared for that kick to come in. Now, this is Dantekar. This is his first raid in a do-or-die raid. He's coming from the bench. What skills can he exhibit? It's not Harish. Every time we've seen Harish come in, running hand touch, again a left raider. So he's got a lot of left raiders in that Palani Tuskers side. And I think he will be succumbed to the pressure. Wanted to go for the dubki, but not towards the lobby. Sorry, my friend. Navneet Nagar says, thank you so much for the tackle point. जी, नवनीत के खाते में जरूर यहाँ पर शायद आपको टैकल पॉइंट जाता हुआ नजर आए, पर आज फिर से पेरियार पैंथर्स के लिए वो डिफेंस एक बड़ी चीज वहां पर बन रहा है. और रेडिंग में भी अगर आप देखें तो शिवम अनिल को 10 पॉइंट मिले, उन्होंने जरूर सुपर 10 बनाया है. वहां पर हाई फाई जरूर नवनीत ने बना लिया, बट कृष्ण मावी बिल्कुल देखिए, उन्हें पता था कि मैं पकड़ा जाऊंगा. किक लगाई, उसके बाद पूरी तरह से शायद सरेंडर करते हुए नजर आए. एस्केप रूट को ढूंढने का प्रयास भी नहीं किया, हल्की सी कोशिश की, बट सिर्फ टर्न होकर वहीं पर खड़े भी हो गए थे. Is he struggling from some injury, some internal injury which we do not know of, is Krishan Mawai? Because he's very, I won't call it, he's very scared. He's very skeptical about not struggling. He's very, very skeptical about not struggling, not putting that effort to escape. I think he's saving himself for something which I do not know why is he doing. If there is no internal injury, that should not be happening. As a raider, if you do not put in some value on your raid point, then that shows you're not struggling. जब तक आप स्ट्रगल में जाएंगे नहीं, तब तक वो आपके लिए मल्टीपल पॉइंट्स आएंगे नहीं. आप वो ज्यादा बोनस जरूर चुरा सकते हैं, पर वो बोनस रिवाइवल नहीं देते हैं. 1-2 किक्स आपकी काम लग सकती है, पर नवीन, मैं कृष्ण मावी की जगह हमेशा वो आशीष भाटी को देखना चाहता हूं. आशीष भाटी में जो एजिलिटी है, जो उनका फुटवर्क बहुत तेजी के साथ आता है, जरूर शायद योगेश नागर साहब भी और थोड़ा सा इसे टेस्ट ऑन करना चाहेंगे, या तो शायद आशीष भाटी थोड़ी सी इंजरी कंसर्न है, इसलिए उन्हें शायद सबमिट राउंड के लिए आराम दे रही है. गौरव बंसल का जो ऐसा प्रदर्शन आया नहीं, वो कृष्ण नागर के जाने के बाद, रवि भाटी के जाने के बाद टीम मिस कर रही है. नवनीत ने भी आज हाई-फाई बनाया है, बट कृष्ण मावी देखिए, इंजरी कोई कंसर्न लग नहीं रहा है, कोई बैंडेजेस आपको वहां पर दिखी नहीं है, बट आप उन्हें आगे जरूर जाते हुए देखना चाहेंगे. And Velavan wants to do this, isn't it? He always has this. As Krishan Mawai putting his head down, he will be only answerable for his poor form. Yeah, and Velavan likes to raid. He likes to raid. And another big victory for Palani Tuskers. Make sure this team is putting out their name loud and strong. And Yogesh Nagar Saab is all okay at the end of the match. See, it is very nice. He's like that father figure. We always, happy to be congratulating the players at the end of it. But at least during the match, I want him to get a little more authoritative. Yeah, he congratulates the other teams also very nicely. He's a very sweet person. But during the match, I need him to get that aggression of Mandeep Katkar. At least half of Mandeep Katkar, not fully.
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो देखिए एक अलग हिसाब के कोच है, वो तो तुरंत कह देते कि भाई अगर ये टैकल नहीं हुआ तो बोरिया बास्तर बांध का आपको वापस भेज दूंगा मैं। बट चलिए तो जरूर वो जोक सपाट की बात करते हैं, बट कंफाउंडेड था मेरे लिए मुकाबला देखिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुकाबला बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा, मजा और ज़्यादा इस मुकाबले में आएगा जब शिवम वर्सेज वहाँ पर लड़ाई होगी शक्तिवेल की और सुधाकर वर्सेज लड़ाई होगी नवनीत की। बट सुधाकर ने इन सभी लड़ाइयों में से ऊपर उठकर आए हैं और ये खिलाड़ी स्काई इज द ओनली लिमिट नजर आती है। गोकुल अकन्नन ने उसके बाद बहुत अच्छा किया, नवनीत ने कुछ टैकल जरूर किए बट उन्हें हाई फाई मिला है, बट वो टीम के लिए जब तक अगर आपके लिए काम नहीं आया हो ये रेड, अगर ये सुपर रेड किस तरह से बची, क्योंकि विल11 का सही समय पर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से साथ आया, क्रिश्चियन मावी को ये करने की आवश्यकता है, बट सुधाकर ये हमेशा एक्सेप्टेशन से बहुत ज्यादा परफॉर्म करता है खिलाड़ी। Absolutely, absolutely. And there, signature move, diving back holds of Veerans. I'm sure he's mastered it, and he should just be really careful sometimes of not injuring himself, because he goes in full swing and full grunt on that back hold. But then again, Shaktivel, he's done well, and also the entire unit of Palani Tuskers, as Mukesh Kannan slowly but surely helps the team whenever it's required. And Ashrit will probably relieve you for the post-match presentation preparations as well. And Sanjeevi, what a difference that he makes. When there are no raiders, he steps in. When there are no defenders, especially in the right corner or left corner, he goes in and guards that fort and all out. That is the difference. Major, major difference. 2 all outs that's been inflicted on the Periyar Panthers, and look at that for the raid point. It is 23 raid points, almost close to the overall point of the Periyar Panthers, and out of which 15 is for the Storm. He's done well. As Navneet Nagar, he just picked up his high five as a captain, and that's all to speak about for the Periyar Panthers. Raiders not firing. Shivam Thakur did well, but much better performance by the Storm today. 23 raids, out of which 15 were successful, 65% of raid strike rate. Fabulous way for him to make a storming comeback. Stormy Sudhakar. And yes, Navneet Nagar, the captain of Periyar Panthers, he's got the best defender trophy, 55 tackle success rate. He is good, very good in that right corner, and especially if you need to attack Sudhakar from the right corner, you need such strong tackles to happen. That's it for this game, as once again Palani Tuskers proving it that they were the top players. As Chola Veerans with inform Arjun Rathi will take on a little struggling Murthal Magnet in the 9 PM game. So we'll slip into a short little break and come back for the post-match presentation, and then at the 9 PM game it is Chola Veerans versus Murthal Magnet. I'm Navin Chowri signing off, and see you soon at 9 PM.
The unbeatable streak of Palani Tuskers is going on high. Welcome to the post-match presentation of match number 104. Now we would like to thank our partners, associate partners, Swaraj Directors, broadcast partner, Fencode Fantasy partner, Dream 11, Physio partner, UEM. और ये मुकाबला था Palani Tuskers बनाम पेरियार पैंथर्स, जहां पर दो बड़ी टीमें यहां पर भिड़ रही थी और दोनों ही टीमें टाई के साथ आ रही थी। एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद थी, वैसा ही ये मुकाबला रहा। हालांकि एक तरफा बनाया Palani Tuskers ने आगे चलते हुए 40-24 इस मुकाबले को जीता और 16 पॉइंट की लीड के साथ बता दिया है कि Palani Tuskers भी है तैयार टॉप 2 के लिए। अब सीधा चलते हैं अवार्ड्स की तरफ और अवार्ड्स को फर्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स को प्रेजेंट करने के लिए मैं हमारे साथ इनवाइट करना चाहूंगा श्री कुलदीप दिलाल जी सर, जनरल सेक्रेटरी अमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, एंड साथ ही साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा श्री कुमार विजय सिंह जी सर, जनरल सेक्रेटरी बिहार स्टेट कबड्डी एसोसिएशन, और इनका हम स्वागत करते हैं। और पहला अवार्ड है स्वराज ट्रैक्टर्स रेडर ऑफ द मैच, जो रहे एक बार फिर से स्टनिंग कह लीजिए, स्टॉर्मी कह लीजिए, सुधाकर, जिन्होंने स्कोर किए 15 रेड पॉइंट्स। लेट्स हैव अ लुक। विश्वसनीय है ये खिलाड़ी। और चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ, जो है स्वराज ट्रैक्टर्स डिफेंडर ऑफ द मैच, जो बने हैं नवनीत नागर पेरियार पैंथर्स के। इन्होंने काम जरूर अच्छा किया है, हालांकि टीम जरूर हारी है बट इनका हाई फाई लाजवाब रहा है। आइए आप सभी के साथ देखते हैं। और नेक्स्ट सेट ऑफ अवार्ड्स को प्रेजेंट करने के लिए अब यहां पर मैं हमारे साथ इनवाइट करना चाहूंगा श्री राजेश सिंह जी सर, जनरल सेक्रेटरी यूपी स्टेट कबड्डी एसोसिएशन, और उन्हीं के साथ में यहां पर इनवाइट करूंगा श्री चेतन जोशी जी, उत्तराखंड कबड्डी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी। इन दोनों का हम तहे दिल से इस प्रेजेंटेशन में स्वागत करना चाहेंगे और इनका होना बहुत जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट अवार्ड की तरफ, जो है स्वराज द पंगेबाज ऑफ द मैच, जिन्होंने लिया है सबसे बड़ा पंगा, शिवम अनिल को एक तरफा रोका है, वो है इनका लाजवाब प्रदर्शन। वेल मूव ऑफ द मैच के लिए मिलेगा ये द पंगेबाज ऑफ द मैच का अवार्ड। आइए देखते हैं। और इन्होंने किया है सबसे बड़े पैंथर को द फ्लाइंग बैक होल्ड का यहां पर पंगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस प्रेजेंटेशन में मैच नंबर 104। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।